Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained. For subtitles, please click here on your screen. Tracking milestones of an incredible journey spanning 30 years. Rahman Music Sheets. I was expecting it to be like stomping or but it was आयो उसमें आप देखो तुम the last that that steps are there. It's like a bass and treble. तो जब मैंने कराया and Aamir loved it and he said, "But you don't leave me." जो होता है मुझसे कराना आयो एल्बो नहीं इनसे हमें सो वो गाना इतना ऑड एंड द वे रहमान संग इट सो आमिर के ऊपर फर्स्ट टाइम हमने जब सुना वो तो इट डिडंट साउंड वियर्ड बिकॉज द सॉन्ग इटसेल्फ वाज सो वियर्ड एंड कोरियोग्राफी थी वियर्ड Ram Gopal Varma, popularly known as Ramu or RGV in the film community, started his career by making films in Telugu. He also wrote a Tamil film Thiruda Thiruda, directed by Mani Ratnam. It was released in 1993. Now, Ramu was ready to make Rangeela. It was also the first original score in a Hindi film by A.R. Rahman. The film had two choreographers, Saroj Khan and a 19-year-old young boy, Ahmed Khan. In our last episode, Ahmed Khan narrated stories behind the choreography of two songs, Yai Re and Hai Rama. Link to that episode is given in the description. We continue with Rangeela, its songs and their choreography by Ahmed Khan. You know the track, Spirit of Rangeela, when it was composed, there was a story behind it that Mr. Ram Gopal Varma narrated to us when we interviewed him on Rahman Music Sheets. Let me present it to you, then we'll talk further. The Spirit of Rangeela, he completely did the whole thing and sent it to me. And I and my cousin heard it for the first time when it came to Bombay. And my first reaction of my cousin was, it's horrible. You know? Now I was confused. I didn't know what is good or bad because I obviously had something else in mind. I didn't expect this. But my cousin saying it horrible, I was down. Then I was going for shooting and I played it in the car and I asked my driver, what do you think of this? My driver said it's same thing, horrible. It's very bad, sir. I what is this music, you know? Then I was shooting there. I played it on location, and by lunchtime everybody was singing the tune. You know. Now that whole phenomena, which logically I can't understand, the so-called slow poison of Rahman. Now here we had Urmila Matondkar's character dancing for herself. Now how did you conceive it? And what was the thought behind shooting the song on a seashore whereas Jackie Shroff sits on a rock, totally mesmerized? स्पिरिट ऑफ रंगीला जब मैं सुनता ना तो मुझे डर लगता है बिकॉज रामू जी टोल्ड मी अहमद दिस इज़ द म्यूजिक एंड ये वी हैव टू डू वन स्पिरिट ऑफ रंगीला एक डांस पोर्शन करना है द गर्ल इज डांसिंग ऑन द बीच एंड वन गाय इज जॉगिंग बाय एंड ही सीज हर एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड एंड शी इज़ नॉट डूइंग इट फॉर हिम शी इज़ डूइंग इट फॉर हर सेल्फ बट दिस गाय गेट्स मेस्मराइज्ड ऐसे गाना सुनते म्यूज़िक सुने तो उसमें जस्ट म्यूज़िक था तो I was expecting it to be like stomping or but it was it was symphonies that girl's voice. So Ramu ji इसमें डांस कैसा होगा? I'm thinking it'll be some hip hop or some dubstep or some R&B. He said Rahman has sent this. तो आई वॉज कन्फ्यूज आई सेड यार इसको मैं कैसे कोरियोग्राफ करूँगा तो वी वेंट टू द प्रैक्टिस प्लेस एंड आई स्टार्टेड रिहर्सिंग तो वी पुट इन सम जैज बैले वी गॉट सम कॉन्टेम्प्रेरी टू इट मिक्स किए एंड हमने शूट किया वाइल शूटिंग करते करते मैं बहुत कंफ्यूज था
And Ramoji said, Ahmed, you're not looking, you're full. Well, maybe Ramoji, I'm very sorry, but I wasn't prepared for such matured sound. What A.R. Rahman has given. I was expecting a younger, poppier beat. So we shot it. Edit kar liya, dekh liya. And I was actually not happy with my work. So Ramoji said, what do you feel? I said, Ramoji, I don't know. I'm not feeling we are there. He said, I feel the same. We reshot it. Again I rehearsed. Again I re-choreographed. Again we went and again we shot it. So जब मैं ये म्यूजिक सुनता था ना, ये म्यूजिक वाज लाइक अ नॉट फॉर अदर्स इट इज वाओ प्लेलिस्ट पे बज रहा है, मेरे लिए नाइटमेयर है ये म्यूजिक. सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं उस वक्त इतना घबराया हुआ था, बट जब सेकंड टाइम हमने शूट किया तब एक मुतमईन सा फील हुआ कि हाँ आई थिंक नाउ वी हैव गॉट इट. देन उसमें एडिशंस हुए, उसके हिप्स के शॉट, जगुदा कतरा कट कट वो कट्स आ गए, जो म्यूजिक को सपोर्ट मिला है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन एंड द सॉफ्टनेस ऑफ अ गर्ल. तब मैं समझ पाया, ओ इसमें ये एक मिक्स है. द गाय इज लाइक द रॉक सिटिंग ऑन द रॉक्स एंड द गर्ल इज लाइक द सी शोर का पानी. तो ये दोनों का मिक्स था. तो मैं सेकेंड टाइम जब शूट किया हमने ना, तब मैं सीखा, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज वेरी यंग, सो इट टेक्स टाइम, बट थैंक्स टू मिस्टर राम गोपाल वर्मा दैट he agreed to reshoot it and we got that finally in this. Viewers of Rahman Music Sheets now have an opportunity to connect with Ahmed Khan. In the comment section, write a message for him. Mention your favorite song that he choreographed. Ahmed Khan will respond to some selected messages. If you have not subscribed to our channel, please subscribe it now. Raakh, released in 1989, received 3 national awards, including a special mention for Aamir Khan. It is considered to be the first film that explored Aamir Khan's full range as an actor. A child also acted in the film with Aamir Khan, but destiny had other plans. Very soon, the same child will direct Aamir Khan. देखिए, आमिर खान के साथ मैंने एक फिल्म की थी जब मैं 11 साल का था. फिल्म का नाम था राख, एंड मैं एक चाइल्ड एक्टर था, बिकॉज मैंने मिस्टर इंडिया भी की थी उसके पहले. तो जब राख की तो आमिर की वो आई थिंक सो फर्स्ट फिल्म थी उसकी, क़यामत से क़यामत तक रिलीज़ भी नहीं हुई थी. एंड सडनली ही सीज मी एज अ कोरियोग्राफर ऑन द सेट एंड इज लाइक, अहमद व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड, आमिर, आई एम डूइंग दिस फिल्म एज अ कोरियोग्राफर. एंड इज लाइक, अरे रामू, अहमद? ही सेड, या व्हाई? तो इवन आमिर वाज शॉक्ड, और जितना वो शॉक्ड थे उतना मैं भी सरप्राइज था कि हाँ एक्चुअली मैं आमिर के साथ एज अ कोरियोग्राफर खड़ा हूँ. ही नोज मी एज अ चाइल्ड एक्टर. तो ही इज़ लाइक, आर यू श्योर रहमान का म्यूज़िक है, हो पाएगा? सो एंड एज एन एक्टर फुल कंसर्न होना चाहिए, डेफिनेटली म्यूज़िकल है, बट आई विल अप्रिशिएट हिज काइंडनेस एंड आई कैन से दैट ही कुड फोरसी व्हाट राम गोपाल वर्मा कुड. नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एन एक्टर और डायरेक्टर टू मेक एन एक्टर अंडरस्टैंड कि यार ये नया लड़का है, ये कर लेगा. बट आई रियली अप्रिशिएट द फोरसाइट ऑफ मिस्टर आमिर खान दैट ही अंडरस्टूड एंड ही सेड, अहमद गो फॉर इट या, एंड जो चाहिए बता तू, मैं करूँगा और मुझसे कराना. आई सेड चलो डन. एंड देन आई उसमें आप देखो, तुम द लास्ट that steps are there. It's like a bass and treble. तो जब मैंने कराया एंड आमिर loved it and he said, but you don't leave me. जो होता है मुझसे कराना. वो फिल्म बहुत नायाब थी. एंड सी आप देखो, एज अ कोरियोग्राफर उस टाइम पे जितने कोरियोग्राफर्स थे, द यंगेस्ट कोरियोग्राफर वाज 30 years old. और मैं 19 साल का लड़का सेट पे खड़े रह के कॉलिंग द शॉट्स ऑफ मिस्टर A.R. रहमान्स फर्स्ट बॉलीवुड म्यूजिकल. बहुत अजीब सीन्स थे, बहुत अजीब सीन्स. इट वॉजंट अ नॉर्मल केक वॉक, बट रंगीला इज़ नॉट क्लोज टू माई हार्ट. आई कैन से रंगीला इज़ माई हार्ट. Singing all the songs in Qayamat Se Qayamat Tak, Udit Narayan emerged as the preferred voice for Aamir Khan.
In Rangeela too, Udit Narayan sang 2 songs for Aamir. But Rahman also chose to sing one song. When Rahman sang this song for Aamir, as a choreographer, what was your reaction? सी उस टाइम ना उस वक्त ऐसा था कि एक तो मांगता है क्या एक्चुअली, अगर आप क्या करे क्या ना करे, उदित नारायण वॉइस इज देयर, सो इट सूट्स आमिर खान. आई आइयो अलवो नहीं नहीं इनसे हमें, सो वो गाना इतना ऑड एंड द वे रहमान संग इट. तो जब पहली बार हमने सुना तो आई थिंक बात चल रही थी कि somebody else will dub it or redub it, ऐसा कुछ चल रहा था बात. बट जिस तरह रहमान ने गाया था, आई डोंट थिंक एनी अदर सिंगर कुड हैव मैच्ड इट. नॉट दैट दे कुडंट सिंग इट, बट एक लय होती है, एक तरीका होता है, एक मिजाज होता है गाने का. तो जिस तरह उन्होंने गाया, आई डोंट थिंक कि कोई और गा पाता, और वो एक टोन होता है वॉइस का, वो दे पाता. सो आमिर के ऊपर फर्स्ट टाइम हमने जब सुना वो, तो इट डिडंट साउंड वियर्ड बिकॉज द सॉन्ग इटसेल्फ वाज सो वियर्ड एंड कोरियोग्राफी थी वियर्ड, एंड वो जो थॉट था जादू कि एक लड़की इस लड़के को जादुई दुनिया में ले जा रही है, उसमें हमने VFX वगैरह यूज़ किए जो हम लोग याईरे में करने वाले थे. तो देयर वर सो मेनी थिंग्स विच वर लाइक फिटिंग अ स्क्वायर इन अ सर्कल. तो वो मिस नहीं हुआ कि अरे आमिर खान के फेस पे पहली बार AR रहमान की आवाज़ कैसे लगेगी, बल्कि इट वाज अ परफेक्ट ब्लेंड एंड इट वेंट सुपरबली ऑन द एंटायर फाइनल आउटकम ऑफ द सॉन्ग. सो वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ, बट आई थॉट इट वाज आइसिंग ऑन द केक विद रहमान सिंगिंग इट. Ahmed ji, is it correct to say that Rangeela ने हिंदी फिल्म म्यूजिक और फिल्म सॉन्ग्स के स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया? मैं तो कहूँगा कि रोजा से स्ट्रक्चर बदल गया है. म्यूज़िक फॉर सेलुलॉइड फॉर इंडियन सिनेमा. आज मैं कहूँ तो अजीब लगेगा, लेकिन उस वक्त के लिए ना गाने सुनना और एक अलग लैंग्वेज के गाने सुनना बहुत कम होता था. रोजा वो म्यूज़िक था जो हम एक तमिल सॉन्ग सुनते थे एंड वी यूज्ड टू लव हियरिंग इट इन द तमिल लैंग्वेज, और वो रिपीट पे बजता था. सो दैट वाज अ शॉकर कि जैसे बैंड स्टैंड में घूम रहे तो यू कूल हियरिंग सम इंग्लिश म्यूज़िक और या कूल हियरिंग सम बॉलीवुड म्यूज़िक. बट हम बैंड स्टैंड जाते थे बॉम्बे में, टाउन जा रहे हैं कहीं, गाड़ियों में यू आर हियरिंग अ तमिल सॉन्ग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s. तो दिस वॉज समथिंग विच वॉज, सबके कान खड़े हो गए थे, यार ये क्या हो गया. एंड दैट वॉज द अराइवल ऑफ मिस्टर AR रहमान. रंगीला डेफिनेटली हिंदी फिल्म थी, पहली रहमान की ओरिजिनल हिंदी स्कोर, बट उसके पहले बॉम्बे थी, बॉम्बे में ही हैड डन हम्मा हम्मा. सो ही हैड केप्ट चेंजिंग म्यूज़िक. उनकी फिर एक और आई थी कादलन, उर्वशी उर्वशी. सो he had already changed the sensibility of hearing music. बड़े बड़े म्यूज़िक सिस्टम जो बेस वाले बिकने लगे थे बिकॉज रहमान की म्यूज़िक की वजह से, क्योंकि हर कुछ सुनाई देता था. एवरीबडी वांटेड टू हियर रहमान म्यूज़िक ऑन नाइस बेस, सबवूफर्स, कि हर चीज़ क्लैरिटी से सुनाई दे रही है. सो ही हैड स्टार्टेड एट दैट टाइम, एंड ऑफ कोर्स रंगीला वाज लाइक, उसके बाद सब काम पे लग गए थे कि ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए और यही तरीके का सब होना चाहिए. तो आई थिंक ही हैड स्टार्टेड द ट्रेंड मच बिफोर रंगीला. Ahmed Khan also choreographed Tal, Mudhalvan and its Hindi remake Nayak and Ghajini. Rahman also composed music for films that Ahmed directed. In near future, we will bring you untold stories behind the choreography of these films. In our next episode, we celebrate 30 years of Roja. Yes, you heard it right. Roja is 30. Released on 15th August 1992. It continues to sound fresh and still haunts us. Do join us in the celebration.
Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.